Hello friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today I am going to explain you the question answers of poem number 1, The Road Not Taken. As I have mentioned yesterday also, my explanation will be from Camp Publication book. Okay, so let's begin. And before that, I will share you something. Okay, and let me share that also. That is the question answers list. Okay, bacho. So, बच्चों, our very first question, where does the traveler find himself? What problems does he face? Okay, यहाँ पे जो traveler है, वो कौन है? वो है अपने और कोई नहीं, लेकिन अपने poet Robert Frost. So, the poet Robert Frost find himself at a divergence. Divergence means a fall, or in you can say in a autumnal wood. Autumnal wood means autumn की season में, ठीक है, जहाँ पे falls, leaf falls ज्यादा होते हैं. He does not know which road to take. He had to choose one as he was one person and he could not travel both the roads even if he wanted to. ठीक है, क्योंकि वो सिंगल बंदा था. ठीक है, बंदा मतलब वो सिंगल थे, अकेले थे, तो दोनों रोड ट्रैवल नहीं कर सकते थे. He has to choose one and only one, as I have already explained you yesterday. He had to choose one as sorry the first road was one which got hidden in undergrowth after some distance, and other road was grassy and had not been worn out by the people. So एक रोड ऐसा था जो थोड़ी देर देखने के बाद एकदम से खत्म हो जाता है, और दूसरा रोड ऐसा है कि जहां पे ग्रास ही ग्रास है, लोगों ने उसके ऊपर चला ही नहीं है. ओके, हाउएवर इफ वन सॉ बोथ ऑफ देम, it seemed that both had been almost used the same. और अगर एक बंदा कोई भी वहां पे वो सिचुएशन में होगा, तो दोनों रोड ऑलमोस्ट सेम जैसे ही उनको दिख रहे थे. ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, ये सेकंड थर्ड जो है that are not so important, but still I would like to explain you. Discuss what this phrase is mean to you. Okay, discuss what this phrase is means to you. A yellow wood. तो yellow wood किसको बोलते हैं? A forest in the autumn season. Autumn season पता है ना, पानखर ऋतु, जहां पे पान जो है वो गिरते हैं, with leaves covering the ground. It also represents the crucial moments of our life. Then next, it was grassy and wanted wear. It was grassy and wanted wear का मतलब होता है कि not many people had walked on the road, so grass had grown on the pathway. अगर grass है मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वहां से चलकर नहीं गया है. Then next, the passing there. The passing there मतलब क्या? The people who used to the road. Okay, then leaves no step had trodden black. इसका मतलब है the fallen leaves had not been crushed under the feet of travelers. ठीक है, leaves no step had trodden black. इसका मतलब क्या है कि पत्ते पड़े हुए हैं, लेकिन वो पत्ते के ऊपर अगर पैर पड़ते हैं तो वो काले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. एंड लास्ट, how way leads onto the way. तो इसका मतलब है how the roads connect to each other. Okay, next, third question, is there any difference between the two roads as the poet described them in stanza 2 and 3? पहले ये खास ध्यान रखना, 2 and 3, and then in the last two lines of the poem. तो सबसे पहले जो है, ठीक है, in the difference between the two roads as the poet describes them in 2 and 3 stanza, second and third stanza. In stanza 2, both the roads were equally fair, but the second one seemed beautiful, grassy, and appeared to be not much walked on. तो इसका मतलब है कि दोनों रोड पहले एक जैसे ही लगे, लेकिन जो दूसरा रोड था, ठीक है, रोड था, तो वो रोड ऐसा है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ग्रीनी था, ठीक है, उसके ऊपर लोग चले हुए भी नहीं थे. However, if one saw both of them, it seemed that both had been almost used the same. लेकिन एक नजर से आप लोग दोनों को देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि both are either unused or are used equally. Okay, then next, the poet chose to travel by the second way. ठीक है, और पोएट ने कौन सा यूज किया? द सेकंड वन, जहां पे लोग ने कम चला था. इन स्टांजा 3, both the paths were having fallen leaves uncrushed as no one had walked on them. और स्टांजा थर्ड में ऐसा दिखाया था
कि दोनों पाथ ऐसे ही है, दोनों के लीव्स जो है वो क्रश नहीं हुए थे, इसका मतलब किसी ने दोनों पाथ पे चलने की कोशिश नहीं की है. द पोएट सॉ द दैट वन वे लेड टू अनदर. He decided to walk on the first path some other day and time, but in his mind he doubted it if that would ever happen. So हमेशा वो ऐसा बोल रहे थे कि पहला मैं पहले दिन ये ट्रैवल करूंगा और दूसरे दिन ये ट्रैवल करूंगा, लेकिन एक बार करियर बनाना है हम लोगों को तो अगर एक पाथ हम लोगों ने फॉलो कर लिया है, दैट मीन्स वी कैन नॉट कम बैक ऑन द अनदर पाथ. तो ये था आप लोगों का स्टांजास in the stanzas 2 and 3. Now, in the last two lines of the poem, the difference between the roads as the poet describes them in the last two lines of the poem, वो क्या था? The poet informs us that he chose to travel on the road less traveled by. तो उन्होंने कैसा रोड पसंद किया जो किसी ने ट्रैवल नहीं किया है, less traveled by. But as time passed, he says with a sigh, that is with sorrow, that it was not easy, but for what he came later in life, he credits to his decision of taking the less traveled road. तो उन्होंने बहुत सॉरोफुली ये डिस्क्राइब किया कि उनका जो पाथ था वो इतना डिफिकल्ट है जो हर कोई पास नहीं कर सकता है, लेकिन he credits himself, okay, for taking that path. Looking back, it was that decision which was made him achieve success and brought him to the position he has been able to reach. और वही पोजीशन से उन्होंने वो टाइम पे सोचा कि अगर मेरा डिसीजन गलत होता तो मैं आज ये सक्सेस मुझे जो मिला है वो सक्सेस नहीं मिल पाता. ओके, राइट. देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. What do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? Important है, हाँ? The poet Robert Frost has in his poem The Road Not Taken said that at the end that as time passed, he felt that success did not come his way that easily, but it did come because of the choice of career he has made. So उनको पहले लगा कि मैंने जो पाथ चूज किया है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे उनको फिर सक्सेस मिलने लगी. एंड देन ही एक्सेप्टेड कि उनका जो डिसीजन था दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर हिज लाइफ, फॉर हिज करियर. The decision he chose, the path he chose is extremely beautiful. His decision to take the second path was the right one, and it has made a lot of differences to his life. और उनका जो ये था path choose करना, being a literature or being a poet is very very difficult, but after that, after the success he got, he said his decision was excellent and that has made all the difference in his life. Okay बच्चों, now next is अब मैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता दूं. How does Frost describe the two roads in the poem The Road Not Taken? How was one path different from the other? So Robert Frost has in his poem The Road Not Taken spoken about the two roads that diverged in autumnal wood. जैसे हम लोगों ने देखा है autumnal woods, जहाँ पे autumn season होती है, पानखर ऋतु जिसको बोलते हैं, and वहाँ पे सारे leaves जो है वो नीचे गिरे होते हैं. He had to take only one road, so he had to choose one of the two roads. He looked down the first road and saw as far as he could to where it bent into the undergrowth. तो ऐसे कर्व आ जाता है पाथ पे, तो जहां तक उनको रोड दिखा वहां तक उन्होंने फर्स्ट रोड को देखने की कोशिश की. Then he saw the another road. In that another road, the other road was grassy and wanted wear. Grassy and wanted wear means वहां पे कोई भी चला नहीं है. That means वो unused road है. The poet felt that was a better one for him, so he chose to travel on the second road. Later he found that both the roads were equally laid and he could change the roads, but he decided to keep the first road for another day, but with doubt in his mind that he might never take it again. So उन्होंने पहले रोड को भी देखा, दूसरे रोड को भी ऑब्जर्व किया, दोनों रोड्स पे से उनको लगा कि सेकंड रोड is best for his career, so he started walking on second road and in his mind he thought कि अगर कुछ नहीं हुआ तो I will travel the first road.
लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है. If you have chosen your path, if you have decided your career in one at one stage of point, then you cannot back to the another decision. Okay. Now next, what idea does Frost want to convey in the poem The Road Not Taken? This is very very important. हाँ, ये एग्जाम के लिए भी आ सकता है. Question number 6. What idea does Frost want to convey in the poem The Road Not Taken? So the poet Robert Frost tells us that everyone has to make a choice at crucial period in one's life. As I have already mentioned you कि अगर आप 10th के बाद you will have to choose either of the three streams, either science, commerce and your arts. तो वो जो लाइफ का स्टेज होगा वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होगा. द चॉइस बिकम्स बाइंडिंग, सो इट शुड बी मेड विथ कॉशन. तो आप सबको जो भी चॉइस करते हो वो एक कॉशियस डिसीजन के साथ चूज करना है, सो दैट कि आपको आगे जाके ऐसा पछताना ना पड़े. व्हेन अ पर्सन वांट्स टू डू समथिंग एक्सेप्शनल एंड न्यू, then one might have to take the choice not taken by others. ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हो जो किसी ने नहीं किया है, तो you have to choose the right path, the difficult path, so that the success can come and हर कोई लोग जो है वो आपकी तारीफ करे. This would pose a lot of challenges and there might be lot of risk involved. However, when the goal is reached and once look back, one finds that making that choice had really helped to reach the present position. ठीक है, आप लोग अगर रास्ते पे निकल पड़े हो, डिफिकल्ट रास्ते पे, तो देयर इज नो गोइंग बैक. ठीक है, एक आपको निकलना ही है, तो चाहे कितनी भी चैलेंजेस फेस करनी पड़े, कितने भी ताने सुनने पड़े, लेकिन एक बार आपने सक्सेस अचीव कर ली, राइट, तो उसके बाद फिर जो सक्सेस आप पीछे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है. एट दैट स्टेज ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों ने जो डिसीजन लिया था, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट डिसीजन. It may have taken time and hard work was required, but it was worth the while. आपने बहुत सारा टाइम उस पे लगा दिया, ठीक है, बट एक बार जैसे ही, as I have said, mentioned again and again, if you start getting success, then no path is difficult for you and no challenges is any more difficult to you. Now next, ठीक है, next very important, ये वाला क्वेश्चन है. ठीक है, ये वाला, have you ever had to make difficult choice? ठीक है, have you ever had to make difficult choice or do you think will have difficult choice to make? How will you make the choice and for what reasons? ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से लिखोगे. ठीक है, ये आप अपना खुद का आंसर बना के भी लिख सकते हो. अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, so what will be the difficult choice I have to had in my life. तो आफ्टर 10th या आफ्टर 12th, ठीक है, मुझे कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी है, that was the best most difficult choice I had done. And then उसके बाद मुझे जो सक्सेस मिला है, as you all know, I am a very successful person. So right now I am reading from your textbook, camp publication, what is given. Luckily till now I have not had to make a difficult choice, but as I grew up there will be a time to make choice regarding the line of study that I want to take up, arts, commerce or science, as I have already mentioned. ठीक है, अभी तक आपने आपकी लाइफ में ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं देखी है या ऐसे कोई चॉइसेस नहीं बनाए हैं, लेकिन एक स्टेज आएगा जब आप लोगों की लाइफ में भी चॉइसेस आएंगे और वो चॉइसेस पढ़ने के रिलेटेड होंगे, करियर के रिलेटेड होंगे, whether to go in which direction or in which stream you want to go, whether it is science, commerce, arts, etc. ठीक है, of course it will depend on my liking for the subjects. What I want to become when I grow up is something which will help me to make a right choice. और वो specifically किसके ऊपर depend करता है, on you, with what kind of subjects do you like, whether you like science, whether you like statistics, whether you like artistic something, so literature, ठीक है, like that. तो वो डिपेंड करता है और वो आपकी ही चॉइस होगी. तो एक स्टेज पे आप लोग ऐसा डिसाइड कर लोगे कि नहीं मुझे यही बनना है, तो मेरा फोकस इस पे ही ज्यादा होना चाहिए. When I come to a junction where I have to choose from the paths available, I will think, ask parents and friends for the advice, pray to God to guide me to choose. और अगर बाई चांस मेरे रास्ते में कोई डिफिकल्टी आती है, तो पहले मैं सोचूंगा, अपने पेरेंट्स को पूछूंगा, अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लूंगा, गॉड से मदद लूंगा, दैट दे विल गाइड मी इन ऑल द बेस्ट वे एंड सो दैट आई कैन मेक माय ओन डिसीजन.
However, the final decision will have to be mine alone, as it will affect my life. Success and failure are part of life, but I must learn to take proper decision in life. तो मैं सबसे पूछूंगा, एडवाइस सबकी लूंगा, लेकिन करूंगा खुद की, बराबर है। चाहे वो मुझे सक्सेस दे या फेलियर दे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही लाइफ के ऊपर रहेगा एंड नॉट टू द अदर्स। मैं किसी के ऊपर ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि आपने मुझे ये थोपा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, second question, after you have made a choice, do you always think about what might have been, or do you accept the reality? अगर मेरी बात करोगे तो I would have accept the reality, कि जो है अब मुझे इसी में रहना है। जैसे सब लोगों ने ऐसा बोला है ना, we have accepted corona, अब मास्क पहन के ही बाहर निकलना है, like that, ये accept, we have accepted the reality। अगर आप लोगों ने कोई चॉइस बना ली है माइंड में, तो you have to accept it होल हार्टेडली कि अब ये मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। ओके, सो अब इसका आंसर देखने क्या दिखा है। ह्यूमन बीइंग्स डू हैव अ टेंडेंसी टू लुक बैक ऑन व्हाट माइट हैव बीन। This is futile exercise. Futile means waste of time. Okay, if it is not going to affect any future decision. However, living in the past which cannot come back is useless. तो हमेशा प्रेजेंट में रहा करो। Never think of past. पास्ट में पास्ट का ही सोचोगे तो आप लोग प्रेजेंट नहीं जी पाओगे, ठीक है, और फिर आपका जो फ्यूचर है वो भी बर्बाद हो जाएगा। फेलियर्स इन लाइफ शुड हैव मेड इनटू स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस। सो अगर फेल होते हो, ठीक है, कोई भी लाइफ स्टेज पे आप फेल होते हैं, तो आप लोगों को निराश नहीं होना है। इससे सीख के आप लोग सक्सेस की और एक सीढ़ी चढ़ सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिजेक्टेड, वन हैज टू स्ट्राइव हार्ड टू फेस hurdles and challenges and do things in a smart and confident manner to come closer to one's goals and succeed in life। तो आप लोग, जैसे मैंने बताया, निराश नहीं होना है, उससे और कौन से अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो डायरेक्शन में सोचना है, ताकि आपकी जो लाइफ है वो और एंड और सक्सेसफुल बनती जाए, आपका जो गोल है वो आपको सामने दिखने लगे। अवर लाइफ नीड्स टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर्स, और हम लोगों को ऐसी लाइफ जीनी चाहिए जो हमारे लिए जो है, मतलब लोगों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे हम लोग जी सके। Now there are some extra questions also which are long answers as mentioned in your camp publication. उसका फर्स्ट जो है, what is the reason offered by the poet in taking the road less traveled by, or justify the title the road not taken, or is the title of Robert Frost poem the road not taken apt means suitable? Okay, so Robert Frost has in his poem the road not taken very well shown us that human beings have to make choice in crucial moments of their life। तो पूरी पोएम किसके ऊपर है? द चॉइसेस। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा है कि क्रूशियल मोमेंट्स पे आने के टाइम ह्यूमन बींग्स कौन सी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। The path or road stands for the direction in life of career। तो यहाँ पे जो path है, road है, वो किसके लिए यूज किया गया है? as career of human beings। The poet said that he came across two paths and he knew that he had to decide to take one as he was one traveler। ठीक है, दो path है, you can choose only one as you are a single traveler। After giving it a serious thought, the poet chose the second road, which was grassy and wanted wear। ठीक है, बहुत लंबा सोचने के बाद उन्होंने ग्रासी वेयर और वांटेड वेयर, जहां पे अनयूज्ड पाथ है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। Midway, he found that each road led to the other and he thought he would keep the first for the another time। और एक बार उन्होंने स्टार्ट कर दिया, फिर बीच में उन्होंने सोचा कि मैं दोनों किसी एक पे ही मैं चल सकता हूँ, दूसरे पे मैं नहीं जा सकता हूँ, और बाई चांस अगर मैं जाना भी चाहूँ तो आई हैव टू कम लॉन्ग वे बैक एंड देन हैव टू चूज। तो उससे अच्छा है मैं जो पाथ पे निकला हूँ वही पाथ पे चलता रहूं। However, he doubted if that chance would ever come। He knew that he would continue with the road less traveled only। As the year passed, he felt the success did not come easily his way, but it did come because of the choice he had made। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है, सक्सेस तुरंत उनको नहीं मिली, बहुत कुछ स्ट्रगल किया, लेकिन एक स्टेज आया कि अब वो एक इतने सक्सेसफुल इंसान बन गए कि उनको अब पीछे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है, और वो सोच रहे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था, the starting a point, that was absolutely correct। His decision to take second path was right one and it had made a lot of difference to the life। Okay,
नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन आई डाउट इफ आई शुड कम बैक. ठीक है, एक्सप्लेन आई डाउट इफ आई शुड कम बैक. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज इन हिज पोएम The Road Not Taken shows us that human beings have to make a choice in crucial moments of their lives. The title is obviously intended to have a symbolic meaning. Symbolic meaning का मतलब है टाइटल में ही itself पूरी पोएम का हम लोग वो बता सकते हैं कि द रोड नॉट टेकन, इसका मतलब कि हम लोगों ने जो पाथ चूज नहीं किया है, ठीक है, उसके बारे में हमको सोचना भी नहीं है. We should be focused on the path which we have taken, or we should only and only focus through our goal. The poet said that he came across two paths in his life and he knew that he had to take one as he could not travel both the roads together. He had to make choice. कोई भी इंसान दो रोड पे एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है, एक ही ट्रैवल कर सकता है. एंड एट दैट टाइम यू हैव टू मेक अ चॉइस. मिडवे ही फाउंड दैट ईच रोड लेड टू वन अनदर, so he thought he would keep the first which he had not chosen to be taken for another time. उसको लगा कि शायद मैं दूसरी बार कभी ले लूंगा, लेकिन वो कभी होता ही नहीं है. However, he doubted if that chance would ever come. He knew that he would continue the road less traveled only. और उन्होंने फिर एक बार full and final decision ले लिया था कि he would travel the road which has been less traveled by someone. Next, third, what is wood as per the poem The Road Not Taken and why it is called yellow. ठीक है, यहाँ पे wood क्या है और yellow क्या है और क्यों है वो हमको डिस्क्राइब करना है. The poet Robert Frost, ये जो पहली लाइन में बता रहा हूँ वो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा. ठीक है, the poet Robert Frost has in his poem The Road Not Taken mentioned the words yellow wood. The word wood stands for uncertainties in life. Uncertainties in life मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम लोगों को डिसीजन लेना ही पड़ता है. ठीक है, we don't know the future and yet we have to move it into by taking the right path and making the right choice. हमको फ्यूचर नहीं पता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसीलिए एक सर्टेन स्टेज पे आना है, हमको डिसाइड करना है कि हम अपना फ्यूचर इसी लाइन में बनाएंगे. Okay, a forest also has no specific pathway. People make their pathways in the forest or walk in the ones made by others. ठीक है, तो अगर आप कोई फॉरेस्ट में जाते हो, ठीक है, अननोन है आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्या सोचोगे, कहीं पे भी चले जा सकते हो, ठीक है, कोई भी रोड पे जा सकते हो, या तो फिर लोगों के पैर जहां जहां गिरे होंगे you will try to follow them. A yellow wood is an autumnal forest. Autumnal forest again autumn season होती है जहां पे पानखर ऋतु जिसको बोलते हैं, leaves are shaded from the trees. Autumnal forest where the fallen leaves have covered the ground and the paths, therefore it becomes more difficult to find your way. Life is like that. ठीक है, जैसे अब पाथ जो है वो क्लियर नहीं होगा क्योंकि ऑटम का फॉरेस्ट है. ऑटम के फॉरेस्ट में जनरली लीव्स जो है आर ऑन द ग्राउंड, तो पाथ फाइंड करना डिफिकल्ट होता है. लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है. We need to decide the roles we want to play and then face challenges to reach our goal. और फिर हम लोगों ने एक पाथ डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद और कुछ नहीं देखना है, just focus on our goal, just do the right things and you can achieve your goal. The last question, describe the significance of good decisions. In what manner do they affect one's life? Okay, the poet Robert Frost has in his poem The Road Not Taken brought out a very important message for the readers that decisions have to be taken in life at crucial moments. ठीक है, तो एक सर्टेन स्टेज आएगा जब आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा और वो डिसीजन आपके लाइफ का क्रूशियल मोमेंट होगा जहां से आप अपना करियर बना भी सकते हो, करियर बिगाड़ भी सकते हो. तो चूज योर डिसीजन या चूज योर डिसीजंस वाइजली. ओके, bad and wrong decisions can spoil or ruin our life and we would be left repenting. ठीक है, तो हम लोग अगर कोई गलत रास्ते पे चल जाते हैं फिर बाद में वापस वो रास्ते से आना is very very dangerous, और you can say कि it will be repenting मतलब पछताने जैसी हालत. ठीक है, most failures are due to the bad decisions of our life. ठीक है, और जितने भी फेलियर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्योंकि एट सर्टेन स्टेज हमारा जो डिसीजन था वो गलत था. ऑन अदर हैंड गुड डिसीजन ब्रिंग्स अस सक्सेस, और अगर आपने गुड डिसीजन लिया है तो इट विल डेफिनेटली गिव यू डेफिनेट सक्सेस.
In life there will always be challenges and obstacles even after we make good decisions. ठीक है, आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना ही है, ठीक है, मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना ही है, तो देर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस कमिंग ऑन योर वे, बट इफ यू हैव डिसाइडेड दिस, द पाथ इज वेरी गुड, then you can definitely overcome all the obstacles and you will become that successful. Life is not bed of roses, but human beings have a mind and brain unlike other animals, so they can understand their choices and take the best decision to reach their goal. ठीक है, हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास दिमाग है, नॉट लाइक अदर एनिमल्स, एनिमल्स के पास दिमाग नहीं होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स कैन डिसाइड देयर फ्यूचर कि हमारा यही पाथ है, हम लोग यही गोल पे फोकस करेंगे, हम डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर ब्रेन्स, ओके। Our happiness and way of life depends on our ability to make good decisions in life. और अपनी abilities पे हम लोग ये पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो ले सकते हैं, और एक अच्छा डिसीजन लेने के बाद अपनी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं. So that's it बच्चों, that is the end of our explanation of question answers from poem 1, The Road Not Taken. If you have gone through this entire video, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. I am Sanket Purohit. Thank you very much. Bye bye, students.